So yeah, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Becoming Sudeep. Today is our day 18 of solving DSA question. So yeah, without wasting any time, let's start our day with the quote for the day. So yeah, artist seems to get in the way of the music. Okay, get out the way of the music. Don't write the music. Write the music, write itself. So yeah, बेसिकली यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं सर कि जो हम जैसे कुछ भी एग्जांपल है, जैसे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ना कि मुझे कुछ व्यू चाहिए, कुछ फॉलो सब्सक्राइबर चाहिए। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है, अपन एक बेटर इंजीनियर बनना है। तो बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे तो मुझे कुछ किसी का ये है कि मुझे व्यू आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर बिकमिंग अ बेटर इंजीनियर आई एम जस्ट डूइंग दिस. So yeah, basically this was the meaning of this quote. ये quote और भी डीप मीन आप इसके सर्च मार कर देख सकते हैं। इसके और भी गहरे मीनिंग्स हैं जो कि आपकी सिचुएशन को डिपेंड करेंगे. So yeah, this is a famous quote written by one and only Michael Jackson sir. As you guys know him, he's a very famous pop star, dancer, and the greatest of all time. I have been watching him dancing since childhood and have been a great fan of him. So recently his movies came in which his, I can say, chacha, beta, bhatija, nephew has been acted as Michael Jackson in that movie. So if you have not watched, just go and watch. You will have a great experience. And so yeah, that's it. मैं जितना कहूँ इनके सर के बारे में कम हूँ. So yeah, without wasting any time, let's start our question for the day. So yeah, this is our question for the day. That's it, code number 12, integer to Roman. So yeah, this is basically a medium level question. So we're gonna first read out the problem, write down the approach, thereafter we will solve. So yeah, guys, always keep a pen and paper ready before solving any DSA question. It would be great, very beneficial for you. So yeah, 7 different symbols represents numerals of the following value. So this is a similar question based on yesterday's problem, sorry. Only the difference is that here we have to reverse. We have to give the Roman value. So these are the symbols with the values. You see, the Roman numerals are formed representing the conversions of decimal value from highest to lowest. Okay, converting a decimal place into a Roman number has the following rules. Okay, if the value does not start with 4 or 9, select the symbol maximum value that can be subtracted from the input. Append the symbol to the result, subtract its value, and convert the remainder to a Roman number. Okay. If the value starts with 4 or 9, use the subtractive form representing one symbol subtracted from the following symbol. For example, 4 is 1 less than 5. So here IV, okay. 9 is 1 less than 10. So here it will be IX. Similarly for these all etc. Only powers of 10 IXCM can be appended consecutively at most 3 times to represent multiples of 10. Okay. You cannot append 550, 500 multiple times. You need to append a symbol 4 times. Use the subtractive form. So yeah, 4 times use the subtractive form. Given an integer, convert it to a Roman numeral. So yeah, basically here you can say 1, 2, 3, 7 Roman letters are given, symbols are given, which have the following values. And there are some exceptions like 4 or 9
more 9 and more 9 only, yeah, in which the Roman value, the smallest Roman value will come first before the largest Roman value. Similarly, for 4 it will be IV, and for 9 it will be IX. Similarly, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम हर एक वैल्यू पे अगर उस पे अगर वो वैल्यू आता है 4 या 9 या फिर कोई भी वैल्यू हमारा मैच करता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डिपेंड करेंगे, डिपेंड मतलब ऐड करेंगे सिंबल को, अपने सिंबल को किस में ऐड करेंगे, अपने हम एक एरे बना देंगे जिसमें हम ऐड करेंगे, फिर हम स्ट्रिंग दे देंगे, स्ट्रिंग वैल्यू, और फिर आपका हो जाएगा, फिर आपका जो एरे है जो उसमें से हम माइनस माइनस कर देंगे हर एक अपेंडिंग, हर एक एडिशन के बाद हम लेंथ ऑफ द एरे से जैसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से हम लोग माइनस कर देंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में so we're gonna return the answer in string form। so यहाँ पे हम चेक कर लेंगे एक बार एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3749 नाम given and output release, so yeah, explanation 3000 triple MHM plus okay 3700 DCC 500 100 and 100, okay, 40 will be Excel 10 less than 50, okay, 9 will be IXH 1 less than 10, not 49 is not 1 less of 50 because the conversion is based on decimal places, okay. So only this exception cases, and with the help of this 7 symbol value we're gonna solve the question. So yeah, we're gonna first write it in brute force approach, in which we will be using brute force approach। यहाँ पे कह सकते हैं in terms of, we can say, length of the code, not in terms of complexity or space complexity। तो brute force हम यूज कर देंगे आपका लूप्स लगाकर और if else कंडीशन लगाकर। सेकेंडरी हम लोग जो कि बेटर वे में लिखेंगे, ऑप्टिमाइज्ड वे में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विल बी यूजिंग ग्रिडी अप्रोच। सो या लेट्स कोड। सो या यहाँ पे पहले हम अपना एक स्ट्रिंग बिल्डर का बना देंगे आंसर, एरे बना देंगे स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग बिल्डर का बना देंगे, उसके में ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस मुझे रिक्वायर नहीं चाहिए, जितना मुझे आंसर में आउटपुट चाहिए उतना ही उसका लेंथ होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा ना हो कि उससे कम ना हो, चलिए। और यहाँ पे रन वाइल लूप, वाइल नाम इज ग्रेटर देन 0, जब तक 0 से बड़ा है। after we're gonna add the if condition, if num is greater than, we can say 1000, we're gonna start it in descending order from largest to smallest। so यहाँ पे हम लोग अपना आंसर में अपेंड कर देंगे, क्या अपेंड कर देंगे, सिंबल अपेंड कर देंगे। हमारा सिंबल क्या जाएगा, 4000 it is m, so we're gonna append this m and we're gonna subtract the value from the num, num you can say value, yeah। similarly we're gonna run another if else if condition, इसमें बेसिकली हमारा else if condition ही चलेगा। तो सेकंड में हम लोग हो जाएगा 900, सो यार हम लोग सेट डॉट append कर देंगे। यहाँ पे हमारा सिंबल बन जाएगा m 1000 और that 900 100 less than m, so it will be cm।
After we will subtract that number. So इसी तरह हम लोग कॉपी कर देते हैं इसको, इस तरह के हमारे अप्रोचेस आ जाएंगे। 7 प्लस जो एक्सेप्शन वैल्यू हो जाएंगे दैट इज 13। यहाँ पे हम लोग 500 हो जाएगा, 500 में आपका हो जाएगा डी माइनस कर देंगे 500, 400 हो जाएगा सी डी 100 लेस देन 500 माइनस 400, फिर करोगे 100 100 के लिए सी या माइनस 100, after to 90 10 less than 100 minus 9 after to 50 50 comes for L minus subtract 50 50 that's 10 less than 50 and it will be 40 yeah 40 के बाद आपका आ जाएगा 10 so 10 for 10 symbol will be X and minus 10 here. After 9 that will be 1 less than 10 minus 9 will be 5 that's V minus 5 4 and 1 4 के लिए I less than वो भी हो जाएगा 1 less 5 less than 5 फिर 4 and for last else condition it will be if condition रिमूव कर देते हैं, सेकंड कर देंगे I और इनको माइनस कर देंगे 1 को। so yeah we're gonna finally return the answer as string in the string. So yeah, this will be our code. We'll just run this code and see what's the output is giving. Something is messy string builder, method string builder class. So this okay, so we're gonna put it the class string builder import कर देंगे all string builder okay, so we have new string हो sorry ये जरूरत नहीं था yeah, so this new was missing. So let's see what's the output is giving. So yeah, all our test cases are passed. So basically this is our here our time complexity will remain same of n as we are occupying the limited spaces only. We are using 13 number of elements. So here our space time complexity and space complexity will be remain constant. But यहाँ पे हमारा जो कोड हो जा रहा है वो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, so we're gonna write it in more optimized way, you can say, using greedy approach. So you're gonna make two arrays, one int type, that will be values, carry the values 1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4 and 1. Similarly, we're gonna make another string type array. It will be symbols. It will be M, CM,
डी सी डी सी डी हो जाएगा, उसके बाद का सी एक्स सी, आफ्टर एक्स सी एल एक्स एल, एक्स एक्सेल के बाद 40, 40 के बाद 10x, 9, 5, 4, and 1. So yeah, this will be our string array. Then we're going to make the string builder for calculating the output. This is equal to new string builder. Initialize कर देंगे. So here we're going to run a while loop. No loop. यहाँ पे पहले हम एक loop चला देंगे, normal loop equal to 0 up to values total. I plus plus. So here I'm gonna make a while loop. So here जब तक हमारा num greater than equal to है हमारा वैल्यू जो आई से, तब तक ये while loop चलेगा. तो यहाँ पे पहले हम nums को माइनस कर देंगे अपने वैल्यूज के इंडेक्स के वैल्यूज पे. फिर आफ्टर गोना append in the answer with symbols I index, symbols at I index, and we're gonna finally return the answer as string. So yeah, this is our code. Let's run this code and see. So yeah, all our test cases are passed. So we're gonna just run submit this code and see all other test cases are passing or not. So yeah, all the test cases are passed. So this is basically a optimized approach in terms of for interview. You can write this code, but the space complexity and time complexity will be same for both code. So yeah, this was our. So yeah, this was our question for the day. Next we're going to solve our DSA question number 19 tomorrow. So तब तक के लिए हम मेरे साथ बने रहे, DSA प्रैक्टिस करते रहे और बस बने रहे और क्या. तो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. मिलते हैं कल अपने डे 19 पे. तब तक के लिए बाय बाय.